होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं एक बहुत ही अलग चीज़ लेकर आई हूँ, बिकॉज मैं बैठी हुई बोर भी हो रही थी और तकरीबन 4 बजे हुए हैं। तो मैं ना इस टाइम थोड़ी बोर सी होने लगती हूँ। वैसे इस टाइम मैं मोस्टली एडिटिंग करती हूँ, बट आज मैं एडिटिंग बाद में करूँगी। तो मेरे बेटे ने मुझसे बोला कि मम्मा मुझे कुछ काम करना है, कुछ एक्टिविटी करनी है। तो मैं हमेशा ना उसका पूरा साथ देती हूँ एक्टिविटी करने में। जब भी उसका कोई मन होता है ना कोई चीज़ बनाने का, तो मैं उसके हमेशा साथ होती हूँ। आज वो कुछ आर्ट क्राफ्टिंग करेगा तो मैं भी उसकी थोड़ी हेल्प करूँगी। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी कर लेगा। बचपन में मैं भी किया करती थी। बचपन में बहुत शौक़ था आर्ट क्राफ्टिंग करने का, तो मैं किया करती थी। तो शायद मेरे बेटे को भी इसीलिए ये चीज़ जेनेटिक आई हो, बिकॉज मेरे हस्बैंड को तो नहीं है शौक़ इन चीज़ों का, बट मुझे बहुत शौक़ था कभी जब मैं बहुत छोटी थी। तो हालांकि बहुत साल हो गए, अब तो मैं नहीं करती हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन हाँ जब भी मैं फ्री होती हूँ तब मैं ज़रूर कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आर्ट क्राफ्टिंग ही कर लूँ बेटे के साथ, और उसकी हेल्प भी हो जाएगी और उसे भी मुझसे कुछ हेल्प मिलेगी और मुझे भी उससे कुछ सीखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बड़े ही बच्चों को सिखाएं। ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़े ही बच्चों को नहीं सिखाते हैं। कई बार बच्चे भी बड़ों को बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें जहाँ से जैसे भी जो भी अच्छा सीखने को मिले वो हमें सीखना चाहिए, ना कि बुरी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे बेटे का मन था। वैसे भी वो उसका शेड्यूल भी बहुत बिजी है। वो स्कूल में फिर ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, प्रेशर रहता है। तो उनका भी माइंड फ्री होना चाहिए। बुक्स भी कितने पढ़ेंगे, टीवी भी आप कितना देख सकते हैं, बुक्स भी ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। और खेलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज अभी लॉकडाउन है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। मेरी कोई रेसिपी में नहीं, मेरे आर्ट क्राफ्टिंग में। तो चलिए। Hello friends, I am Iman. Today I am going to show you how to make paper flowers, and they really look very beautiful, and you can use them for decorating your house for occasions like Diwali or whatever festival you celebrate. So let's get started. सबसे पहले ना ये डिस्पोजल प्लेट दी है मेरे बेटे ने और बोल रहा है कि मम्मा इन पे आप पेंट करो और ये फ्लावर बनाएगा और फ्लावर भी आपको दिखाएगा कि ये कैसे बनाता है। तो इससे तो अच्छा है कि मैं पहले पेंट कर लेती हूँ, तो काफ़ी काम इसका आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे पेंट करती हूँ मैं। वैसे काफ़ी साल बाद मैं ब्रश को हाथ में लूँगी। Nice, right? But now I will also show you how to make it. So as you can see, this is blue color. So if you want to make another color, then you can take like suppose this peach. So peach color, and we keep the rest of paper here. And what you need to do is first take here over here and mark it and make it square. Fold it into triangle, and then like we do in aeroplanes, same way. But now we don't need to make an aeroplane. We have to cut it. And it really doesn't matter if you cut it if you don't cut straight, because later on, as you can see, we have to like make it another shape. So don't need to cut it exactly straight. You see, I roughly cut a triangle, so it comes a square. This is what you need to do. And now one is ready. So let's make another. Same way as we did. The cut does not need to be proper. But why? But because after that we are going to give it a shape. Oh, I see. Okay. Now we can cut from here. Okay. One is ready. So now I have two. But you need 4 like that, okay?
So you need basically 4. So now you will think You can take the another color na. yeah, you can take, but we need 4 for one flower. Okay. So, 4 flower yeah. in the one page. Yeah, that's right. Okay. No, 1 flower in 4 in 1 page. That's all. Okay. Yeah. So now you see you'll think there's no space, but no. This part you can again fold this. As I told, the size does not need to be same, but it should be like approximately same. That's why you can cut from here also. See, it's easily got it. And now over here I can just fold and cut. गाइस मैं आपको ना किसी दूसरे वे में सिखाऊंगी। पहले इसका वे देख लेते हैं कैसा बनाता है, बट जैसा मैं बनाया करती थी मैं इसी मेथड से बनाने वाली हूँ। So you can see I got the third piece. No, fourth. See, we got all 4 pieces now. So now what we have to do is take this one, or basically all of them. You need to straight and make it into a rectangle. Don't have the green color na? No. See, I want the green color. You can see I have a neon color. No, but I want the green color. You can paint with the dark green. So little bit light Oh, green yes, and all. yes. So this we have to do like that, and we have to make it a rectangle. And now as you can see this flower, same way we have to make it. But I'll teach you how to make it. So you can as I told, you need rectangles. So all these 4 are here. You need to align them and make sure that you align them from the bottom equally. It doesn't matter however it goes down from the top. You need these to hold them and put it on the table so that it comes aligned from this side bottom. And now what you're gonna do is, as I told you, don't need to make a same shape. You can only to cut properly. So this is what will happen. As you can see now, I have aligned it. After aligning them, you need to hold here the scissors and see properly. गाइस अब नाइफ पर ज़्यादा हाथ चलता है, ब्रश पर नहीं, क्योंकि ना आदत हो गई है कुकिंग में ना। हम लोग इतने घुस जाते हैं ना लेडीज़ लोग कि बाकी चीज़ों की हमें याद भी नहीं रहती, और अगर याद भी आ जाए तो वो बात नहीं रहती जो हम पहले किया करते थे। So basically now see, this is, now we have 4 semicircles. Now if we open them, they are a circle, but what we need to do is now, see, so this is basically pink color, so you can think we are going to make a rose, so let's make a rose. So I aligned them and I cut it equally. Not equally, I think. No, it's fine, it doesn't matter a lot, but if you want you can do it. I will do this for trial. So Okay. after that I'll also cut this. I'm telling you, if you want new to this, you can try like this. Now we have stapler. So as I told, these 2 you should keep them like this, keep them like joint. Basically you have to join them. And now what you need to do is fold them and fold into a quarter, one fourth. Okay, now we're going to open them, and you can see there's a line which shows the half for this. Okay, so now over here you need to take your stapler and pin it over here. So now I will show you. See. But you can use the glue. No, you can use glue, but Why? in the glue what will happen if somebody pulls it will tear, and plus in the glue Okay. it becomes sticky and the paper may Yeah. become very loose. But Okay. stapler is, you can see it's perfect, Yeah. so it doesn't really affect it. And now you can see these 2 are connected like this, but now so you can look. You need to look at this step properly over here, and over here also it is like this. But now see, this is now a semicircle only.
but from here you need to open it. See, over here it is. Now I'll open them and you can see there are 4 like that. You can see, right? And now what you need to do is, over here the side basically where which you open, there is no stapler. So how we are going to do is, take one more petal, keep here, and now you are going to use the glue, because over here stapler is giving a good strength, but over here glue will give you a good strength. Here's the glue. Any glue you can use. So first we are going to open it, keep on the table, and put the glue. और गाइस हंसिक सो रहा है इसलिए ये काम हो रहा है, अदरवाइज वो नहीं सोता तो कुछ भी नहीं करने देगा. So you can see I have stuck this. Now you are going to see a magic. So basically this is the where I stick it. I also add. So basically, if I understand, you may not able to understand. Will not be able to understand like this. If you don't, then what you just keep in mind is those 4 you need to like make it in this alone. So now you can see that this is the 1 semicircle, 2 and 3. Now I have made 3, but now I'm going to open this part like this. And over here we are going to keep. Now you can see this is the 4th one. Now I see, as I told, either you can glue them, either you can use a stapler also, but I would say for stapler, because stapler is easy, and also if you are using stapler, see where you put the stapler in the between, for the next step you need to put it a little bit far from between. Right. Now all those 4 I have aligned it in like in a cross way, like this one, this and this 3, this 4, like that. Okay. And now I will open it, show to you. And friends, you can see now I'll teach you properly how to do it. So all those 4, we're going to open them, and you can see this was 1 semicircle. Now I'm going to take this inner like this. I'm going to open it over here like this. Open it, and now see those 2 semicircles I opened it, and the inner is here. So over here you need to hold. Take the stapler and staple, either you can glue it. You can see now this 2 has been stapled. So now I will take them aside and take the other semicircles and staple them also. This is almost ready, but we need to adjust the petals. So like that, I'm going to keep my fingers here. This you can see I made it into how many? 3 folds. So I will show you. See, 1, 2, and basically how 3. This is the 1 square, 2, 3. Now 1, 2, 3, and this extra coming, what you need to do, just cut it. ये देखिए मैंने एक पेपर लिया है और उसको इस तरह से ना फोल्ड कर लिया है, ठीक है।
and see, now this became a perfect square. Now I'll show you the magic. When you will open it, what you see is there is 1 2 3 4 5 6 squares. 6. So this is an easy way to use your paper nicely, and all of them are equal only. So now take and cut out all these 6. ये देखिए इस तरह से ना ये मैं कॉर्न टाइप का बना लूँगी। ये मेरा तरीका है। ये देखिए इस तरह से मैं कॉर्न बना लूँगी। इसका छोटा छोटा कागज़ को कट करके। अभी आगे देखिएगा। As I told you, we have to make 6 and we need 4 of the semicircles in a one cloud. So in that I need 6, so 2 are left over. So I will again cut out 6 from this. Then I will have again 2 left over. So then you can reuse them again. Actually, when you will cut out this, you will get total 8 because in the you see, again I have semicircles. I will again keep it in a flowers. Look at it. Look at it. ये बना है मेरा फ्लावर पुराने जमाने का। तो भाई मेरा तो है, तो मेरा तो ऐसा बना है। ये देखिए, और वो भी इतनी देर में बना है बिकॉज ना तो मुझे प्रैक्टिस रही। और सच बताऊँ
अब इतना मन भी नहीं लगता इन चीज़ों में। पहले तो मैं बहुत क्या करती थी ऐसी चीज़ें, लेकिन अब ना इतना ज़्यादा मन नहीं। अब तो मुझे अभी भी याद आ रहा है कि मैं प्याज कैसे काटती हूँ और टमाटोज कैसे काटती हूँ। तो हालांकि बहुत सारे फूल आते हैं, मुझे गुलाब का भी आता है बनाना। गुलाब जो आरकंडी का एक क्लोथ आया करता था, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता, बट एक आरकंडी का कपड़ा आता है कुछ, तो मैंने उससे भी गुलाब के फूल बनाए हुए हैं। और पता नहीं वो रखे होंगे कि नहीं, मम्मी से पूछना पड़ेगा। बट हाँ, मैंने वो फ्लावर भी बनाए थे और वो बहुत सुंदर बने थे। तो कुछ इस तरह का मेरा फ्लावर बना है। स्टेपलर कर रहा है और मैं इसको ग्लू लगा के मेहनत करके बना रही हूँ, तो इसीलिए मुझे तो भाई बहुत टाइम लगा एक फूल बनाने में।